Hi everyone, very good morning in the Daily Transform series at 10 a.m. on the DAMS YouTube channel as well as on the DAMS app. And reason I am here today in the morning is to give you the final push before the exam because we want you to know that the final month before the exam is very critical, very critical. Whatever you do in the final 30 days or the final month can be the game changer. So I'm Dr. Sumer. With me I have Dr. Deepti, and Good we morning, will try our everyone. best to give you the final push, as Dr. Deepti always says. As I always say, yes, that's right. Okay, so it's a pleasure to be back with all of you yet again, another day. And I hope you all enjoyed the MIQ session yesterday. Did you like the discussions? Yes, super high yielding. Okay, so we are doing a lot of free education at this time, and the quality is top notch. So if you go through the predictor series, if you go through the MIQs, if you go through the daily test that we are pushing for all of you, you will really know that we're trying to keep you aligned. And as Dr. Sumer has said, that the last month is especially important to ensure that not just we are putting in a lot of hard work, we are putting in the hard work in the right direction, है ना? So बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हो वो क्वालिटी हो, उसका हिट रेट अच्छा हो, वो आपको सारे सब्जेक्ट से रोटेशनली आपको यू आर एबल टू रिवाइज. सो देयर आर छोटे छोटे थिंग्स वी हैव टू टेक केयर. ओके. And we are actually very confident of what we are delivering. And the confidence is not because of any arrogance, it is because of the number of years we have done all this. So we are even confident if somebody is only attending YouTube's playlist or like MIQs or या. INICEF Predictor series, they should get a strike rate in the real exam. You यस understand? यस. And that's the power of DAMS. That is the power of DAMS, and that is where we call ourselves alphas because we that is the power of DAMS. That even if you do a YouTube series with us, and it will give you a higher strike rate versus whatever you might have collected. So we know what is required, and we are very confident about delivering that key punch. And I hope you are also enjoying the new case of the day series that we have put on the app. We are या. putting very important topics into very interesting cases, and I have a feeling that we have hit the nail on the head. Once the exam boards will also start looking at more cases, it would happen. Exams evolve, and last 26 years I've seen the exams evolve, and our goal has always been to make sure that we give you the edge we give you the edge over others, that we are able to predict everything. So we have also put in a section called as case, because one day the cases would increase, that would happen in India, because uh, the like I'm sure many of you would agree, in the INICET paper they had one liners, which is not a good idea. You don't want one liner in a central institute paper. And if I can see it, I'm sure many of you can see. And I'm also happy that you are liking the new logos, the new interface, and also यस. the artificial intelligence. I see one बच्चा in the chat saying तपन के साथ Cortex AI से मैं सारे टॉपिक 2 दिन में कर पाया, and that is the power of AI. Now I'll ask Dr. Deepti to add on to this, but my understanding of technology is it makes humans more efficient. If you're using it, you become more efficient, and that is the goal of this transformation in DAMS. We want you to understand we are the alphas not only in the academics but also in tech. So we will take here onwards. We have taken the infancy steps now, but we will keep improving and we'll keep adding more power to you both in academics as well as in tech. एब्सोल्युटली यस, वी आर कमिटेड. एंड यू नो यही यही चीज है जो एक्चुअली डॉक्टर सुमेर को ड्राइव करता है टू कीप डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. आई मीन आई हैव सीन दिस पर्सन and I have seen the transition, and I have seen how he takes up challenges and how committed he is to just keep doing something new, to stay ahead, to utilize things to give the best. So it's his vision, and I would say कि एब्सोल्युटली यस. मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलती हूँ कि हर गेम का एक या हर जंगल का एक लायन होता है, एक टाइगर होता है, एक गुंडा होता है ना? सो it is his vision, and we as a team are working towards it, and it's very essential that
We tell you all that we are absolutely committed to bring the best. This is the beauty of staying connected with young minds, that we also want to get better, right? We want to meet your expectations. We are happy to hear, your suggestions, your inputs, whatever you guys want us to do. We try to bring it on, and I think that's what Dr. Sumer actually aspires for. Now, coming to quick Yeah, queries. I'll just add a line that this only happens on video. Once the video is off, she'll say, "Boss, ये हो गया That's बहुत." not Share, true. share, असली share मैं ही हूँ. I'm not talking about ghar, right? So Uh, let's not talk about the home parts, which definitely I take care of. But yes, I okay. want to take a So query. एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि सर मैंने LRR कर लिया है. Now how do I get the NEET PG PYTs? I would suggest there are two things that you should be doing. I hope you know DVT. DVT is one of the most fertile source which covers everything high yield for your exams, and it is known to give you 70-80% strike rate. So if you have not done DVT, Manoj, that should be your go-to thing. अगर DVT भी कर लिया है और LRR भी कर लिया and only you want to see the PYQs and discussions, then you need to do the PYQ Ka Baap. It covers the video solutions of all the 3 years NEET PG and FMGE exam. in fact, I want to say this. Somebody who hasn't done the PYQ Ka Baap, they're asking, should we do it now? I would say yes. The video discussions are absolutely amazing. They're very focused. They're not just covering PYQs, they are covering, PYTs. And in fact, हमने एक special part रखा था उसमें, where we teachers were also predicting in one slide what else is likely to come in that topic. So yes, you can, go through the videos maybe at a faster pace. But if you haven't done it, this is the best way to approach PYQs, the PYQ ka baap. Okay, and I And I also think, want to say, Dipti, I just add on to what you said with the question above. He says कि मैंने PYQ का आप एक बार अटेंड कर लिया है. अब मैं क्या डायरेक्ट PDF पढ़ सकता हूँ? Definitely, हाँ, that's a yes, good idea. That's why we have absolutely. given you the PDF. Absolutely. Once you've seen the video discussion, yes. मैं तो खुद बोलती हूँ उसके बाद don't linger on with videos. Use the PDF that we are giving you. It makes it faster also. Makes it more active learning. एक बार जरूर देखो to know the approach, to see how we solve live, how we respond to queries, what all things we tell you, because उससे आपका knowledge बढ़ता है. Once you have done that, then yes, you should go through the PDF. नहीं, IMI CET PYQs अभी मैं बोलूंगी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है. They were more important before any set. Now वो नवंबर give में करेंगे, stress अक्टूबर में to, करेंगे बेटा, नवंबर के लिए हिमालय. ओके. एक so क्वेश्चन मैं और now लेना give चाहता stress हूँ. to NEET एक PG and क्वेश्चन मैं लेना FMG चाहता हूँ. PYQ का बाप. डॉक्टर दीप्ति, एक मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ. ये बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर मैं नोट्स में बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका हूँ, क्या मुझे LRR और DBT करना चाहिए? एपी करना चाहिए? जरूर DVT तो करें बिल्कुल मतलब करना बेटा. ही है. We are कई बार not ना giving बेटा, you an अगर option. आपको नोट्स बहुत ही कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट डीबीटी कर लो, लेकिन छोड़ना मत. होता क्या है, कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि मैं ना ये सब मेरे को आता है. बेटा, आ रहा होता तो वो स्कोर में रिफ्लेक्ट हो रहा होता ना. तो मेरा आपसे जरूर एक रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट द प्रोसेस दैट वी आर डिलीवरिंग. आई हैव फुल फुल कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. मुझे पता है कि यार इतना सारा जब इकट्ठा हो जाता है आखिर में, एक टीचर का बना हुआ अगर तुझे एंड में मिल रहा है कि 30 टीचर ने बना के एक तेरे लिए डीवीटी बना दी है, उसको परफेक्शन के ट्रैप से बच मत. इट इज मस्ट डू. ओके, मैं एम नॉट मिक्सिंग वर्ड्स. ठीक है एपी, आई एम नॉट मिक्सिंग वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू करेक्टली. करना है, करना है, करना है. ओके. ओके. समबडी इज सेइंग, जैसे किसी का राधा का मैसेज है, माय पैथो इज वीक. हो सकता है किसी और सब्जेक्ट, किसी और बच्चे का कुछ और वीक हो. राइट नाउ, if you already are able to identify that out of these 19 subjects, these are the subjects which are pulling me down, please utilize Cortex AI golden points. राइट हो सकता है कि आपका कंटेंट सुपरफिशियल हो और आप उसमें से की चीजें नहीं निकाल पा रहे हो. So for your weak subjects, it's very simple. Go to the videos, go to Cortex AI. It will give you all the key things, whether they are concepts, whether they are lines, or whether there is a factual information. Right? It will really help you, especially for your weak subjects. Yes, please use it. एक बार आदत पड़ गई तो उसको छोड़ोगे ही नहीं. Right? And I see some students who would say that I've done my primary reading from some other resource. Will DVT help me? So DVT is what the exam is going to ask.
सो माई सजेशन इज एंड माई रिक्वेस्ट इज, सपोज बच्चा है मेरे पास, कहता है सर जो डीवीटी पढ़ा रहे हैं अगर मुझे नया लगा तो, मैंने नया लगा तो फिर तो और भी जरूरी है कि भाई कर ले, यही आएगा पेपर में। वी आर डीलिंग विद प्योर क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स, इट इज नॉट जस्ट आई एम हु इज गोइंग टू टीच। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा रेडियोलॉजी, मैडम पढ़ाएंगे ऑप्शन एब्सोल्युटली। कहीं नहीं, लेकिन 28 और टीचर होंगे जो अपने अपने टॉपिक्स को कंसाइज कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी हाई। लास्ट ईयर का नीट पीजी पहले के किसी भी नीट पीजी से रिपीट नहीं था, बट डैम्स के डीवीटी से वी हैड अ massive strike rate in the last NEET PG. See, please understand, DVT is not out of your course. ठीक है, ये ध्यान दो, बात को समझो. DVT is what is more likely to be asked. We know what our students' problem is. They can't concise, and a lot of times, they don't know ki what should be absolutely done in the last minute, and that is why we teachers have done it for you. Right? So DVT is not something which is extra from your course. It is from within your course. In fact, it is from most important topics. We want to ensure that you stay in touch with those things, especially in the last 20, 25 days, so that a lot of MCQs come to you as a reflex. ये बहुत जरूरी है बेटा कि मुझे कम से कम 50 से 60% ऑफ द पेपर तो रिफ्लेक्सली सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में सोचने लग गई तो ओवर थिंकिंग की वजह से आई विल डू ब्लंडर्स, राइट? सो एंड 50 ना टू मैं ना उन एफएमजी बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जो अभी हमारे साथ हैं, जैसे अहमद शेख है एंड लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर देयर, वो सेइंग कि सर हमारे लिए क्या फाइनल पुश है। सो बेटा पीवाईक्यू तो आपको दोनों को ही करने हैं, दोनों को ही करने हैं बेटा। कौन से एग्जाम के? दोनों एग्जाम के। टू गेट द मैक्सिमम स्ट्राइक रेट फ्रॉम द पीवाईक्यूज वी नीड टू अंडरस्टैंड द बोर्ड। नेशनल बोर्ड इज गोइंग टू मेक योर नीट पीजी एज वेल एज एफएमजी। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेट, वो अलग बोर्ड है, उसको छोड़ देते हैं। 3 साल की नीट पीजी और एफएमजी जो पीवाईक्यू के बाप में हमने कवर किए हैं, ये दोनों को करने हैं, कम से कम 2 बार करने हैं। ठीक है, बस सिर्फ एफएमजी के लिए फर्क क्या करना है, एफएमजी के लिए जैसे हमारा नीट पीजी में एलआरआर डीवीटी होता है, हमने उनका एक कॉम्बिनेशन बना के एफएमजी का कोर्स बनाया, इसका नाम है डीएफएक्स। सो ऑल यू नीड टू डू इज डीएफएक्स, पीवाईक्यूज, सीबीटी, मॉक टेस्ट। Yes, absolutely. Now, please understand. Somebody, there are two queries about this. That आपने कहा था कि एक cycle of LRR और करो, हमने वो कर लिया है. तो now can we shift to DVT? Absolutely yes. DVT plus tests जैसे आपने लिखा है, that is exactly what you have to do. So DVT plus test plus wrong diary. एंड जो भी आप गलत कर रहे हो उसके लिए यू कैन गो सिलेक्टिवली गो बैक टू योर नोट्स टू सी कि व्हाई डिड यू डू इट रॉन्ग. इज इट अ कंटेंट बेस्ड एरर? इज इट बिकॉज इट वाज सिंपली वॉलेटाइल फॉर मी? राइट? सो for your selective mistakes we will go back to notes, but otherwise we will now onwards try. So if you have done one cycle of LRR, I want you to shift to DVT and try and do 3 rapid revisions of DVT along with tests. Okay? अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है कि आई थिंक एलआरआर डीवीटी के बारे में हमने बात किया, डीएफएक्स के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा माइंडसेट की करते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर मैं 6 से 8 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। कृतिका, कृतिका थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे इस समय थोड़े से कम है। कैन यू यू नो पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट आखिरी महीने में। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन इफ यू वर स्टडिंग 6 to 8 hours इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इट इज ओके, बट लास्ट पुश है ना, फाइनल पुश, थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए बेटा मुझे आपसे। एक बच्चे ने पूछा सर आई एम स्केयर्ड ऑफ फेलिंग, मुझे भी डर लगता है लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। समझ पा रहे हैं कि ऑल आई एम सेइंग इज कि हारने का डर शुड नॉट बी पैरालाइजिंग मी। ठीक है, इट शुड बी मोटिवेटिंग मी कि बॉस आई डोंट वांट टू फेस दैट, दैट इज व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड। आई डोंट वांट टू हैव दिस फियर ऑफ फेलिंग एज अ से पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑन यू। मतलब उसको मोटिवेटिंग की तरह यूज करते हैं। विजुअलाइज कर अपने आप को कि अगर हारेंगे तो कहाँ होंगे, जीतेंगे तो कहाँ होंगे, एंड चूज वेयर यू वांट टू बी एंड देन ओनली विजुअलाइज दैट पार्ट। एक दो बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर एआई टूल्स के बारे में और बताओ। तो डेफिनेटली वी विल, आई थिंक वी कैन शेड्यूल, व्हाट वी विल डू इज we will schedule in the next few days, we'll schedule the, very soon you'll see the launch of the new tools. We will also schedule the effective use of dance plans, like how a different plan student should be studying. We will be doing that video as well, and we will schedule another video on how to utilize AI to make your journey better, and it will take a separate video only to talk about how to use AI. And whatever you will learn in dams
will stay with you and with life. मतलब एक बार हमारे साथ जब आप एआई सीख जाओगे ना, the most interesting thing will be you will be a smarter doctor because you will see कि बॉस ये कैसे इन्होंने एजुकेशन को अगले लेवल पे किया। कॉलेज अगर सपोज ऐसा लगे आपको कि जो आप अपन कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो स्टोन एज में पढ़ रहे थे, डैम्स के अंदर पढ़ रहे थे, तो टेक एज में पढ़ रहे थे, तो आप टेक एज के डॉक्टर भी बन पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। Okay, somebody is asking, will fast track TND be included in App Live? Absolutely yes. So already we have done the changes. The App Live students from this year itself will get one entire life cycle of TND within their course, which we will schedule in a way so that आप हमारे साथ App Live classes भी कर रहे हो और TND के साथ आप उसकी revision भी कर रहे हो. For NEET PG, for the TND students who subscribe, we are now giving you 2 complete cycles of NEET PG TND and 1 live cycle of INISET TND, everything in one package. We've tried to make our packaging more stronger for all of you with better offerings, right? We could hear what you all wanted, and therefore we have brought these major changes. And I'm sure that each one of you is going to appreciate the things that DAMS is doing for everyone. Okay. And then how to go aggressive. So मेरा हम बात कर रहे थे to about the mindset. So बिल्कुल Shobhi Khan is asking कितने question attempt करें. तो मैं पहले बोलती हूँ, then I'll ask Dr. Sumay to add. Definitely, please ensure that we have seen always, toppers are doing above 190. They are attempting 190 questions. Please ensure you don't go below 185, 180. That too, even if the paper is very difficult. नहीं तो सबको 190 टारगेट करना ही चाहिए. अगर आप 170 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो वैसे भी बहुत मुश्किल है. That's even if you think that you will reduce your number of negatives, लेकिन कुछ नेगेटिव तो होते ही होते हैं पेपर में. सो प्लीज गो अग्रेसिव. और उसका तरीका ये है कि यू डू अ प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम. प्रैक्टिस सेशंस बहुत जरूरी हैं. So that is why we should give grand tests, we should give mock tests, we should give CBTs and try and go aggressive in these practice papers to see ki, where do I falter, what can I improve, how can I work on my MCQ skill. मुझे तो ऐसा लगता है कि ना टाइट्रेट करने की जरूरत है आप लोगों को। ये ना आखिरी पुश जो है ना, इट इज ऑल्सो अबाउट ऑप्टिमाइजिंग हाउ मच यू विल अटेम्प्ट, हाउ विल यू डू योर पेपर। माई सजेशन टू यू इज, एंड आई एम श्योर दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग माई सजेशंस फॉर लास्ट मंथ और सो, मैंने आई थिंक 15-20 दिन पहले बोला था कि अगर आप 45 डेज में 10 जीटी देते हो एंड या जीटी और मॉक का मिक्सचर करते हो, यू गिव 1 जीटी इन एग्रेसिव मोड, सी व्हाट इज योर नंबर ऑफ करेक्ट। एग्रेसिव मतलब जो नहीं भी आते क्वेश्चन उसमें सोचने की कोशिश करनी है, आंसर क्या हो सकता है, कैसे उसको सॉल्व करो। अटैक किया, अटैक, एक जीटी थोड़ा सा डिफेंसिव करके देखा, फिर नंबर ऑफ करेक्ट देखे, अगला अटैक, अगला डिफेंसिव। यू विल सी बाय द टाइम यू रीच योर 5 जीटीज, योर ब्रेन, यू हैव अ सुपर पावर कॉल्ड योर ब्रेन विल टेल यू बॉस मेरे लिए ये काम कर रहा है ना। मतलब यू नीड टू टाइट्रेट योर एग्रेसिवनेस टू द लेवल दैट वर्क्स फॉर यू। ये केवल टॉपर की बात सुन के बात नहीं बनेगी। आपने यूजी में भी देखा होगा, टॉपर जो बोल रहे होते हैं वो एक मीडियम बच्चा जो होता है, देखो 3 तरह के बच्चे, एक तो टॉपर्स हैं, एक बॉटम पे बैठे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे, एक बीच में बच्चा है जो बहुत सारा बैठा है। उसको ना कभी कभी वो टॉपर की बात सुन लेता है, किसी टॉपर का 200 मार्क करे, उसको आते ही नहीं तो उन्हें मार्क कर दिया, तो नेगेटिव भी तो होंगे। you need to find what is really working for you, okay, and that zone usually has to be on a more aggressive side. That is true. To get a higher score in the DVT, in your NEET PG or your INISET paper, you need to go on slightly aggressive, but you need to understand the difference between aggressiveness and foolhardiness. Also you need to see what works for you, what is work for you. So अगला GT जब आप देंगे, एंड आई विल आस्क मैडम आल्सो टू गिव यू अ टारगेट टू गिव अ जीटी, कौन सा देना है वो बताएंगी मैम अभी, लेकिन वो एक एग्रेसिव मोड में, एक डिफेंसिव मोड में, जब तक कि आपको आपका एग्जाम वाला दिन परफेक्ट ना निकले। Absolutely yes. So last Sunday we had a target of mock 9, है ना? So now this Sunday, which is tomorrow, we are going to give one grand test, right? If you have given GT51, so अगर आप ऐप खोलोगे, मैं भी आपके साथ साथ खोल रही हूँ. So if you open the app, the first GT that you see here is GT51. अगर किसी ने अभी तक GT51 नहीं दिया तो वो GT51 देंगे.
Suppose you say you had already given GT51 prior to that, then we will go to GT50, right? अगर GT50 भी दे चुके हैं, then we will go to GT49. So please ensure कि हम ऊपर से शुरू करें और जो हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है हम उस जीटी को कवर करें। जैसे कल डॉक्टर सुमेर ने बताया था कि जीटीज जो हैं वो टीचर एक साथ बनाते हैं, तो ओवर अ स्पैन ऑफ 6 to 8 to 10 GTs, the teachers are ensuring to push whatever is most important for you in a divided manner. ठीक है? So जिसने GT51 किया है वो GT50 करके देखे, अगर GT50 कर चुके हो तो GT49 करके देखो। So from the last 5 or 6 GTs, जो भी मिसिंग है आपका, कल आपने वो टारगेट की तरह देना है। एंड एज डॉक्टर सुमेर सेड, अगर आप पिछले मॉक में अग्रेसिव गए थे तो डिफेंसिव जाके देख लो, अगर डिफेंसिव गए थे तो अग्रेसिव जाके देख लो। टिल द टाइम इट वर्क्स आउट फॉर यू। एक दिन ऐसा होना चाहिए जब वो आपके लिए ऐसा लगे आपको कि अब मैं मेरा एग्जाम परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ। दैट शुड बी बिफोर यू सी द रिजल्ट। समझने की कोशिश करना है। देखो, रिजल्ट अच्छा आता है तो लगता है सब अच्छा ही हुआ था, रिजल्ट खराब आता है तो अच्छा भी किया हो तो लगता है खराब किया था। सो बिफोर यू सी द आउटकम, यू शुड फील दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं मेरा बेस्ट कर पा रहा हूँ, मेरे एग्जाम के अंदर मैं बेस्ट आ चुका हूँ, मेरा फॉर्म अच्छा आ गया। सेंचुरी उसके बाद आती है। यू बिकम द मैन ऑफ द मैच बाद में, शुरू में नहीं होता। शुरू में पहले फॉर्म आती है, फ्लो आता है, वो लेके आना है आपने। और अब ज्यादातर बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं मैडम कि कल GT50 देंगे, वी आर वेरी हैप्पी। ओके, एक ना मैं एक क्वेरी लेना चाह रहा था, बीच में रह गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं फेस टू फेस स्टूडेंट हूँ या अल्टीमेट लाइव, जो अल्टीमेट लाइव इज नाउ कॉल्ड एज ऐप लाइव एंड इट इज इंक्लूडेड इन अवर फेस टू फेस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। उसके अंदर हमने अब फास्ट ट्रैक TND इंक्लूड कर दिया है। And if you have a valid subscription, you will see that fast track TND का एक recorded cycle ऑलरेडी पे वन है, साइकिल हैज बीन and you will एडेड see टू यू। schedule for the next life cycle also. Our suggestion now is, and our endeavor now in DAMS is, we want to increase the value that you give for every course. We have increased the value in a TND course. So many TND cycles are included कि अब तू जैसे होता है ना, पानी में गया तो भीग के निकलेगा, वैसे तू डैम्स के ऑनलाइन कोर्स में आया तो जीत के निकलेगा ही निकलेगा। बिकॉज वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग टू चांस। कोई भी चीज चांस में नहीं है कि तू नेटफ्लिक्स की तरह वीडियो घुमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। And even in our pure recorded course called as Back to Basics, there is a every year one cycle of live rapid revision will happen. So we have made sure that we give the maximum value for an online course on the app, जो कोई भी और नहीं दे रहा। There are people who are offering courses, but then after you purchase the course, they disappear. उसके साथ में हमने ये भी जोड़ा है कि वी विल बी देयर विद यू लाइव एंड थ्रू आउट द ईयर विल कीप टेलिंग यू बॉस अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है। अभी तो मुझे पता है हम एग्जाम वाले बच्चों के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। एग्जाम आने के बाद हम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, इन बच्चों के लिए और बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे उस समय पढ़ रहे होंगे अभी तो हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। एक मैं ना आपके लिए एक बात लेके आना चाहता हूँ। ये बच्चे बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ पूछ रहे हैं, भूलना नहीं है ये बात। कितना भी ग्रैंड टेस्ट दे दो, कितना भी ग्रैंड टेस्ट दे दो, कितना भी मॉक टेस्ट दे दो, जब तक CBT नहीं दोगे ना, एग्जाम एंजाइटी नहीं किल होगी। एग्जाम एंजाइटी के लिए आई वांट यू टू मेक श्योर दैट यू अपीयर फॉर अ CBT, बोथ नीट PG एंड FMG बच्चे। CBT is different, it happens in the computer centers. Go and give the paper in the computer center so that you feel anxious in the damn CBT. If you feel anxious in the damn CBT, in the real exam you will feel ये क्या है, ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो बस वैसा ही है। The real exam should feel like a damn test. राइट। सो somebody is asking कि इस मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो as far as this month is concerned, we've already told you, we want you to primarily focus on multiple rapid revisions with lots of tests and your wrong diary. So how will you do the multiple rapid revisions? You should use the DVT. अगर आप अभी LRR एक अपना साइकिल खत्म कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली ओके, यू कैन स्ट्रेच इट, आई वुड से टिल अ मैक्सिमम ऑफ 10th. बाय 10th यू फिनिश योर साइकिल ऑफ LRR. जिसका LRR का एक साइकिल ऑफ रिविजन हो चुका है, दे शुड स्विच टू DVT एंड स्टार्ट डूइंग DVT इन अ रैपिड वे, राइट। प्लस हमने टेस्ट देने, बहुत सारे टेस्ट हम आपके लिए कर रहे हैं। देर आर ट्रांसफॉर्म टेस्ट जिसमें IBQs भी चल रहे हैं और दूसरे टेस्ट भी चल रहे हैं। Then there are MIQs, most important question series. Then there are mock tests that we are asking you to do. We are asking you to do the grand test as well,
राइट? सो ये सब हम करेंगे, डेली 5 क्विज करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है टू ऑलवेज एनालाइज योर मिस्टेक्स। जो भी आप टेस्ट एक दिन में कर रहे हो, आई हैव टोल्ड यू द मिनिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज should be 50 and we will target around 100 per day. Whatever mistakes we are doing, we need to go back and refer the notes to see why did we do these mistakes. अगर आप वो नहीं कर रहे हो, then no matter how frequently you give GTs, no matter how many tests you give, your number of correct will plateau beta. So please analyze your mistakes. It is very, very essential. ठीक है? And as I said, how frequently are you going to give a grand test? वो मैंने आपको zone wise divide किया हुआ है, right? So there is zone 1 was less than 125, there is zone 2 between 125 and 145, and there is zone 3 who are consistently above 145, है ना? सिर्फ अच्छा, above एक और क्वेरी 145। ले लूँ मैं डॉक्टर दीप्ति, बहुत ज़रूरी क्वेरी है। एक बच्ची ने, प्रिया ने पूछा है, क्या मैं डीक्यूबी करूँ अभी प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्जाम के पास? देखो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रैंड टेस्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग टू ऑल द चिल्ड्रन, एज वी कम क्लोजर टू द एग्जाम, गिविंग full course test mimicking the real exam becomes vital. It will be a game changer. सो समटाइम्स यू से सर मैं थोड़े क्वेश्चन कर तो रही हूँ, मैं काम हो जाए, नहीं होगा बेटा। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रैंड टेस्ट। इफ यू डू डीक्यूबी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस आर वेरी हाई यील्ड, दे आर वेरी गुड, बट यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू कंसंट्रेट फॉर अ ग्रैंड टेस्ट। सो प्रायोरिटी को मान के चलो, प्रायोरिटी विल बी योर जीटीज, सीबीटीज, मॉक टेस्ट। ओके, दैट इज द प्रायोरिटी। ओके। And yes, I will just add as a reminder, tomorrow the target is that we will all do a grand test. If we have covered GT51, we will do 50 or 49 or 48, right? So ऐसे पीछे जाते जाएंगे. They are all recent grand tests, and therefore you must practice all of them to give you the wide range of topics that you need to know for NEET PG, which is what is different between NEET PG and any set. इन्हीं सेट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही पूछता है और उसकी डेप्थ में जाता है। नीट पीजी में आपको मोर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स करने ही हैं। दे आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर कि हम बहुत सुपरफिशियल ना पढ़े हों, कंटेंट बहुत कम ना हो। इसीलिए प्लीज यूज डीवीटी एंड यूज योर रॉन्ग डायरी। ओके, आई थिंक डॉक्टर दीप्ति, थोड़ा सा रॉन्ग डायरी के बारे में भी काफ़ी क्वेरीज हैं। तो रॉन्ग डायरी शुड बी मेड विद द आइडिया दैट दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल डे रिवीजन रिसोर्स। ठीक है, उतना ही लिखना है। आई सी समबडी सेइंग मेरी तो रॉन्ग डायरियां भी भर गई हैं, तो थोड़ा कम लिखते हैं, बेटा उतना रॉन्ग लिखते हैं। डायरी में आपको कंटेंट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नेम ऑफ टॉपिक लिखना है, या एंड दैट टू वेरी स्पेसिफिकली कि टॉपिक में भी क्या सब टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू रॉन्ग। दूसरी चीज रॉन्ग डायरी में लिखनी है वॉलेटाइल थिंग्स which are usually like one liners, right? Like the IOC is this is what I did wrong, the bacteria here is this is what I did wrong. So wrong diary में नेम ऑफ सब टॉपिक आएगा और वॉलेटाइल चीजें आएंगी, एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर सुमेर सेड दिस इज समथिंग दैट यू आर आल्सो गोइंग टू यूज अ डे बिफोर योर एग्जाम एंड इन दिस एंटायर मंथ. ओके, And we are constantly always thinking about that what should an ordinary student do to get into the top league. And that part is what you if you see everything that we do, live rapid revision, DVT, your GTs, then mock tests, then video solutions for your wrong answers, then Cortex AI golden points, we are doing everything to make sure that an average student should get the edge that a topper has. So let's try to understand what a topper has. Topper has the ability to summarize the subject in his head. He has the ability to revise the topic, the most important things again and again, predict what is the most important thing. He is able to, analyze his mistakes and try to find out what is going wrong. On the DAMS app, everything of all of this is being done by your teachers. We believe, and that is our goal also, and every year you will see that we believe that if I'm able to pull you from a medium rank to a top zone, that's my victory. It's not like as an institute we don't really give that importance that के बस तू 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। वो मेरे को लगता है कि वो बच्चा भी होशियार ही होगा जो 1 2 3 आ रहा है। मेरा गोल है, मैं क्या तुझे जहां तू नहीं पहुंच सकता था
वहां पहुंचा दूं, या जो तू अपने अंदर नहीं देख पा रहा, जो तू अपने अंदर नहीं देख पा रहा, क्या वो मैं तेरे अंदर देख के तुझे पहचान जाऊं? सो आई एम टेलिंग यू टुडे, एज टीचर्स वी बिलीव इन योर पोटेंशियल. We believe that you will be able to do exceedingly well in life. We believe in Absolutely. you, and that is what you need right now. Someone that who believes in you. I believe in you, beta, and I'm telling you, you will always find us create products which can be the game changer for you. And with that thought process, we have this year launched a new logo. I'll ask Dr. Deepti to explain to you the logo as well. Let's see if I'm able to get the file. Oh, give me 1 second. I just, how many of you seen the new logo so far? I think Mhm. some of you have not seen it only. Some of you may not be aware of it only. Do we have a new logo? Oh my God, nobody knows. So let me just bring the file on the screen. So the new logo that we've created is DAMS Alpha, which tells us that Are we you going are to now. describe or I start? I think I've already I asked Dr. Deepti to display, although that's not alpha behavior, but we should let the lady talk. Yes. Okay. So, primarily the idea behind DAMS Alpha is a leader. Okay. Alpha is a leader male, classically used in that format, but primarily it means a leader. And dance has always been a leader. ये सिर्फ हम सबको याद दिला रहे हैं कि हम leaders हैं. We have been the first people to almost launch everything, right? So whether it is the type of a course, whether it is notes, everyone around you will see has been using our test papers, our notes. People are modifying them, using it. So yes, we would just want to call it out as yes, it's a recall that we've been leaders and we would be the first ones to also, very importantly, next bring AI into medical education in a big way. We are starting, we've already incorporated, we are very proud of where we have come so far, and I'm sure with Dr. Sumay's vision, he's the alpha for us in DAMS, and yes, with his vision, we are going to bring AI majorly incorporated into the app, and we will bring our app as the best things to offer, not just in terms of how it looks, but also in terms of content delivery, in terms of I would say. In terms of the offerings that we have for students, and we'll yet again prove that we do listen, we do imbibe, and we do bring out the changes. We are ever evolving. We will keep getting better, right? I think that's primarily what we want to say. And yes, uh, the last thing that I would say, and then I would ask maybe what Dr. Sumer wants to say. I also want to say when we say it as DAMS Alpha, we also bring it out as a, a symbol of strength and trust. Okay, we want to show that we have a solid presence on the app. Face to face, everyone knows. We have been there for last 26 years, right? So yes, we have a solid presence, we have a bold identity, even when it comes to edtech and the app. So I would just summarize the. I hope I did a good job on what I feel DAMS Alpha is. Okay. And what we are is now on the screen. So that is the entire agenda behind. A lot of people have asked me, sir, why this logo? Why this? We want to go into the theme that we truly believe in. We believe Next into the minimalistic generation approach. learning. Yes. Yes. And we also believe that now I want you to use the app in a very intelligent way. Suppose you're a third year student, you want to write a short note on something. Just ask Cortex AI, please, write a short note for me on MRI. I'm going to get it in my exam, or write a short note on cataract of oil drop cataract, whatever. So you will see a short note format, and you can. And also there are other features as well which we are holding on, because we want to make sure that the once the launch video is launched, after that, we will be coming up live with the AI tools, and also how to use the DAMS plans, which are now strengthened. There is more in every plan now. There is more in every plan. That is what we have done.
Absolutely, yes. So, we will talk about Myra as well very soon. We will also start talking about our various courses on the app. So, we would love each one of you to join on the YouTube. We will tell you what are the offerings on the app, how it is special, what what are the various courses, which course is suited for which student. So yes, we'll have all those sessions on YouTube. There'll be a series of sessions that we would love to conduct, and we would love all of you to join in and see what the DAMS app, the Alpha, the Med and Tech together can do. Let's hope we yet again prove that we learn, we follow, and we lead. Yes. And we wish you all the best. We are here to tell you कि बॉस तू अच्छा करेगा जिंदगी में. कीप दिस इन माइंड, समवन बिलीव्स इन यू. वो हम है, हम चाहते हैं, हम जानते हैं तेरे में एबिलिटी है. आई नो ईच वन ऑफ यू डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स हैव ह्यूज पोटेंशियल. वो ऐसा वाला ना थॉट मत सोचना कि यार वो टॉपर है वही करेगा, ये बड़े कॉलेज वाला करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. तू करेगा, तू जीतेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. वी बिलीव इन यू. No, we will keep doing the transform sessions. Don't worry, the transform is obviously here. We won't leave you till your exams. We are there to support you every day. And as we said, our goal is to make every student who thinks they're average or below average to reach a level which probably they don't even know that they can. So we are here to push each one of you. You're all super capable, and I'm sure you'll all make us really, really proud. So go have a wonderful day, convert it into a productive day, and we'll see you soon. Take care, everyone. Bye everyone.